Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing about adverb. So let's start. First of all, we need to talk that what verb is. Verb is basically the part of the speech that describes an action or occurrence or indication of state of being. Verb is lifeblood of English language. No verb, no sentence. It's only because of the verb that our words take action and we make statements. In order for a sentence to be complete, it needs to take have subject as well as verb. So the pair of the subject and verb and their agreement with each other is very necessary for a complete sentence in English language. So basically, the things which we need to check when we talk about verb is basically the overlapping of the regular and the irregular verbs, overlapping of the transitive and intransitive verbs, and correct usage of the verbs after causative and subjunctive verbs. And again, there are gerunds and there are infinitives with to or without to. ठीक है, bare infinitives या फिर infinitives. So basically, जो verb होता है, that could be the action or that could be the state of being in something. ठीक है, तो action could be physical and action could be mental, as well as जो state है वो भी physical भी हो सकती है, mental सकती है. ठीक है, इसके एक example देखते हैं कि that Vijay hit the ball for 6. Here the thing which is basically hit, वो आपका क्या है, वो आपका verb है. यहाँ पर we can imagine his happiness. यहाँ पर जो happiness है वो आपका verb है, and his teammates were happy. यहाँ पर again were happy were आपका जो helping verb है जो कि इस आपके sentence को support कर रहा है. The stadium lights was broken verb है. तो ये सारी examples. फिर अगर हम further move करें तो the thing we need to know is that a verb can be in present form or past participle or present participle. अब ये कैसे होता है इस चीज को भी हम जरा थोड़ी सी देर में देखते हैं. तो पहले तो हम देख लेते हैं what participle is. Participle is basically the third form or the ing form of the verb that may function as an adverb or a noun. ठीक है, तो जो verb होता है फर्स्ट करें, जैसे हमने present past present participle और past participle वगैरह पढ़े थे, उसी तरह आप इससे क्या क्या बना सकते हैं. पहले तो इसकी बेस फॉर्म है break, उससे आपने सेकेंड फॉर्म में इसको चेंज किया broke, और फिर थर्ड फॉर्म में चेंज किया broken, और उसके बाद फिर आपने इसको ing फॉर्म में चेंज कर दिया breaking. Then there are linking words. Linking verbs basically have to make a statement not by expressing the action but by expressing a state or a condition. For example, these verbs link a noun, a pronoun or an adjective to the subject. For example, the author is Ali Shan Rao. Here यहाँ पर this is he. अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो is है वो दोनों केसेस में linking verb के तौर पर जो है वो यूज हो रहा है. इसी तरह he looks serious. यहाँ पर जो serious है वो भी अगेन आपके पास जो है ना, लेकिन यहाँ पे जो looks है वो मेन verb के तौर पे यूज हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है स्टेट को या एक कंडीशन को. इसी तरह अगर मैं कॉमन लिंकिंग वर्ब्स की बात करूँ तो वो बी की मॉडिफाइड फॉर्म्स है, लाइक is, am, are, was, were, be, being, can be, is being, could have been. कुछ और लिंकिंग वर्ड्स कौन से, appear, become, seem, look, sound, feel, grow, smell, remain, prove, taste and अगर मैं further move करूँ तो क्या है that many of the verbs in the preceding list can also be used as in action verbs. ठीक है, और linking verbs के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, action verbs के भी. For example, यहाँ पर the farmer grew angry, यहाँ पर जो grew है वो linking verb के तौर पे यूज हुआ है. लेकिन अगर आपने grew को again action verb के तौर पे यूज करना है तो उसका correct version होगा the farmer grew crops. ठीक है, इसी तरह how to solve the problem. ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ पे लिंकिंग के तौर पे यूज करना, कहाँ पे एक्शन के तौर पे यूज करना. यूजुअली क्या होता है कि वर्ब इज ए लिंकिंग वर्ब इफ यू कैन सब्स्टिट्यूट फॉर इट सम अदर वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. ठीक है, अब फर्दर हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. दे आर यूज्ड विद फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स to make tenses, questions and negatives. ठीक है, इस चीज को भी हम जरा डिटेल में देखते हैं. कुछ मॉडल वर्ड्स हैं जैसे कि can, could, should, would, may, might, must, ought to, used to, need, dare. You may leave now, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं इनको यूज करने की. We must pray 5 times a day. It might rain today and I need not go to see her. This is all for today. Thank you so much.